When Gram Vikas started thinking about how we will continue to be relevant to our community partners, we said water and the natural resources around it and the institutions and mechanisms around it, but with water as the anchor point. How can communities look at their well-being, their sustained future? That is the exploration that we are doing with the 𝗪𝗁𝗃 Gram Panchayats program. The program, as we see it today, is built on 4 impact pillars. Sustainability of water and natural resources being one, which means that there is sufficient availability of water, sufficient quality of natural resources that communities will have for them. आमर जल उत्सटा धीरे 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 कमी कमी जाउची तो से जल स्रोत को वृद्धि करने पुनर्जीवित करने झरणा किंबा नदी नाल जेकोसी जल स्रोत को आम पुनर्जीवित करने आम से गाँव पहाड़ उपरे जोटा कि आमर कैचमेंट एरिया भितर आम प्रथम रिचार्ज एरिया आइडेंटिफाई करिकी से भितर कौन कौन स्ट्रक्चर कौ जगार संभव हो पार तार आम गोटे देखुचु माने आइडेंटिफाई करूचु जेमती मीडियम स्लोप रे आमे एसीटी सीसीटी ए स्ट्रक्चर गुडा करि परिबा आ जो जेंटल स्लोप जोट अछि सेटा आमे फील्ड बंद करबा तो ए सब स्ट्रक्चर करबा द्वारा हमर जल स्रोत वृद्धि हेबा सहित हमर जो पहाड़ ऊपर जो सॉइल इरोजनटा जो होथिला सेटा भी आमे रोकी परिबा तार बंद करि परिबा आ हमर जल स्रोत भी रिचार्ज होबो आ प्लांटेशन करबा द्वारा हमर जंगल वृद्धि भी हो पारे। तांको गाँव जो जल उत्स अच्छी से जल उत्स सब कौ कौटी अच्छी कौन पाई व्यवहार करछंती आउ केते मास पानी अवेलेबल रहउची सेटा हमें सर्वे करूछु सर्वे कला परे सेई वाटर सोर्स रो हमें गोटे साइट तैयारी करूछु वाटर साइट इन्वेंटरी बोलिकी तापरे हमें वर्षा पूर्व गोटे प्री मानसून सर्वे करूछु वर्षा पर गोटे पोस्ट मानसून सर्वे करूछु तापरे हमें सेई गाँव गोटे जीपीएस रो सैटेलाइट माध्यम गोटे रिसोर्स मैप तैयारी करा होची रिसोर्स मैप तैयारी कला परे आमे गाँव गोटे 𝗏𝗏 मैपिंग बोली कहूँ सेमती ही गाँव जो वाटर पासबुक अच्छी से पासबुक रो जो पानी अच्छी से पानी को लेकिन आमे प्लानिंग करि परिबा कि घरोई व्यवहार पाई केते दरकार अच्छी चाषबास पाई केते दरकार अच्छी आउ जो पानी जदि बेसी थिबो ताहेले आमे जेमिति जमी सब अच्छी खाली पड़िया न पड़िकी से जमी रे आमे चाषबास करि परिबा जदि कम पानी अच्छी ताहेले एमती फसल सब करिबा कि कम पानी व्यवहार हेई परिबो। Prosperity is the third pillar that WSGP is built on. It's about how producers and the communities can benefit from being climate smart, being judicious about natural resource uses. If availability of water is one area of uncertainty that rural producers face, the second is around weather. The WSGP is experimenting with a network of micro weather stations and manual rain gauges to build Gram Panchayat level weather information and link it with experts who provide weekly weather forecasts and crop advisory suited for that particular Gram Panchayat based on the land use and the cropping pattern in that Gram Panchayat. 𝗪𝗏𝗃 फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप से गाँव में जो मैंने चाषी अच्छा से नहीं गोटे ग्रुप गठन करुचु आ से ग्रुप गठन कर कारण हो कि कृषक मान कृषि कार्य लगाण खर्च को कम करके उत्पादन में केमती वृद्धि हो पार से लक्ष्य को लेकिन आम फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप क्रिएट करुचु तापर पासबुक रे 1000 टंका बांधुंट फास्ट कहीं से पैसा को जमी कृषि कार्य जेकोसी जदि जिनस दरकार हुए कि मनकर जड़े चाषी कम पैसा अच्छी और जड़े चाषी अधिक पैसा अच्छी जड़े चाषी कम पैसा जो मैंने अच्छे से चाषी बेसी जोटा खर्च हो किणा हो जो कृषि कार्य जो लगा हो जो जिनसा से किणी पारुनी। There's an overall issue of safety, the safety pillar, which is around the larger issues of health and well-being and drinking water and sanitation and water quality and environmental sanitation. आम जो WSGP प्रोग्राम भितर ग्राम पंचायत प्रत्येक ग्राम रे केमिति विशुद्ध पानीय जल समस्ते पाई परिबे समस्त घरे किपरि यूजेबल टॉयलेट व्यवहार योग्य टॉयलेट हो पारिबो
तापाई बोली प्राधान्य दिया होउछि तापाई बोली आमे जेजेम सांगरे पंचायत सांगरे कोऑर्डिनेशन करी किमिति पानी जलर व्यवस्था प्रति परिवार को पंचायत रे पाई परिबे तापाई बोली व्यवस्था करूछु। वर्तमान पोषण मित्र मानक सहित जड़ित होइकि आमे काम करूछु। पानी परीक्षा उपरे मेनली आमे काम करूछु जेमति कि वर्षा पूर्वरु आ वर्षा परे नहीं कि आमे काम करूछु। आमे एबे देखिबा पानी को आमे खाली आखिरे देखिले देखा जाए ना कि सेही जिनिसटा को आमे किछि किट माध्यम रे फील्ड टेस्ट किट ऊपर नहीं कि आमे पानी परीक्षा करूचे। हमर पोषण मित्र माने से माने प्रत्येक गाँ जाई कि पानी परीक्षा करूछंती वर्षा पूर्वरु आ वर्षा परे आ गाँ लेवल रे से माने कम्युनिटी मानक सहित जेमति भिडीसी आ एसएजी आ विभिन्न प्रकार कम्युनिटी मानक सहित से माने पानी परीक्षा करूछंती। से गाँ रे कंटामिनेशन जदि बाहरे ताहले गाँ लोक माने ही से माने समाधान पंथा को आणुछंती। जदि बा कंटामिनेशन बाहरे ताहले जेमति बैक्टेरिया जदि बाहरे से गाँ रे से प्रॉब्लमटा काहे की होए कौन कौन रोग हुए से मान को प्रांजल भाव में बुझेला पर से माने निजे ही समाधान को आणती तो द्वारा पानी भलरे से माने व्यवहार करिया पई आगो को बढ़ंती। Finally, the core pillar of equity and resilience. Any program that intervenes with water or natural resources as the starting point will automatically lead to exclusion of a certain section of the population because they don't depend on land or water for their livelihoods. And how do we then ensure that nobody is excluded? भिडीसी लेवल जोटा होता है गाँव सबू जाक लोक समस्त एकाठी होके गाँव में कौन कौन आवश्यक अच्छी से ही जिनसटा से माने उपस्थापन करते जो जिनस हेले गाँव उन्नति हो पार तो से जिनस से डिमांड दे था तो समस्ते उपस्थित गोटे प्राथमिकताकरण करा जाय थाए जे को जिनस गाँव आग दरकार को जिनस पछरे दरकार। Different communities face issues with water security in different ways. What 𝗪𝗵𝗆𝗪, the Village Prosperity and Resilience Plan, does is it provides a system or a tool by which communities can collectivize themselves and present in a systematic way the demands of the community in larger forums such as the Panchayat. One of the important and immediate steps that we take is to make sure that these vulnerable households are not left out from any social protection schemes provided by the central government or the state government. We believe there is scope for a social enterprise approach to rural technical service provision, rural knowledge service provision. The Gram Panchayats approach that Gram Vikas is adopting in WSGP aims to build a network of service providers, men and women, with real capabilities, technical and knowledge capabilities in their thematic area. For instance, geohydrology, groundwater, and afforestation kind of skills. How to raise nurseries, how to identify what species are suitable for which soil. We call them the 𝗪𝗪𝗲𝗪. So we identify youngsters, train them in different areas like water resource management or enterprise development, community planning, and these youngsters are then given training on soft skills like leadership programs and also how to set themselves as an enterprise, as a service enterprise, providing different services to the communities. So that is how we are tackling to address the lack of service providers in the rural communities that we work. Gram Vikas came into being as a facilitating organization to help build capabilities of rural communities, to address challenges that they face on a day-to-day basis, but do that in a way that is sustainable, that is inclusive, that preserves and maintains the dignity of rural communities, not as mere takers of charity, but as controllers of their destiny.